Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. मिलिए दान बहादुर जी से। अरे अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, मनोज पाठक। नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर स्टूडियो में चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Manoj. Yes, friends, the headlines first. Global rating agency SNB said India will be the world's third largest economy by 2030. Benchmark indices ended higher for the sixth consecutive session. Nifty crossed 20,850. Sensex closed at 69,296. And in intraday trade, Brent crude was trading at $78.41 per barrel. ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने कहा वर्ष 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था बन जाएगी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। घरेलू शेयर बाजार में लिवाली का सिलसिला लगातार छठे सत्र में भी जारी। सेंसेक्स 69,296 पर हुआ बंद। निफ्टी 20,850 के स्तर को कर गया पार। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $78.41 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। S&P Global Ratings on Tuesday said India will be the world's third largest economy by 2030, but a major test for the country would be to unlock the immense opportunity and become the next big global manufacturing hub. The US-based rating agency expects India to be the fastest growing major economy in the next 3 years, with GDP growth reaching 7% by 2026 from 6.4% projected expansion in the current fiscal. Indian economy grew 7.2% in 2022-23 fiscal ended March 2023. India's GDP expanded 7.8% and 7.6% in the June and September quarters respectively. Moving on, India's services sector activity continued to expand in November, although the S&P Global Purchasing Managers Index PMI, as we call it, fell to a one-year low of 56.9. Data released on December the 5th showed. While the gauge of services sector activity fell from October's 58.4, it was still above the key level of 50, which separates expansion in activity from contraction for the 28th month in a row. The composite PMI also fell to a one-year low of 57.4 from 58.4 in October, although it could have a steeper decline had the manufacturing index not increased last month, with data released on December the 1st showing that PMI rose to 56.0 from October's 8-month low of 55.5. So, Sushma, our report says S&P Global Ratings on Tuesday, India will be the world's third largest economy by 2030. Much of it, I mean, exactly that's what the Honorable Prime Minister has been reiterating, that from fifth we are going gung-ho about the fifth, but hang on, we are going to be the third largest economy by 2030. What do you say on that? Well, the outlook is very bright just now. The latest data, I think,
which probably has been discussed in this program, is the second quarter results of GDP data, which show that the country has grown, the economy has grown by 7.6%. Now, this was very unexpected. The first quarter was 7.8%. That was considered normal, but it was expected by all economists and even by the Reserve Bank that it will moderate to about maybe 6.7%, and that by the end of the year we should have an average overall growth rate of 6.5%, which is still very good and would probably still keep India as the fastest growing economy in the world. But surprisingly, and I said surprisingly, against the expectations of economists and RBI, the GDP growth has been 7.6%, which is only a slight moderation from 7.8%. And the real acceleration has come from a sector which is very critical to the economy, and that's manufacturing. Manufacturing has grown by 13.9%, and of course it was a low base. There was negative growth last year at the same time, but this is a very key area. We have also had good growth in the construction sector, in the electricity sector, but manufacturing is definitely the key. There has been an area of weakness, which is agriculture, which has declined slightly, and perhaps this is an element that we need to be slightly concerned about. But it is manufacturing. In fact, till now we have not been concerned about agriculture. We have always been concerned about manufacturing not picking up. This is showing that the policies that have been aggressively pushing in investment in the infrastructure sector, that have been pushing for easing the ease of doing business, of promoting a better investment climate, seem to have succeeded with this element. Of course, we have to see what happens in the next quarter, but the outlook is definitely looking very bright right now. So this is the fruit of all the, whether it was GST, improvement for the MSE sector, new laws coming up, and tightening up the banks, the reducing of NPAs and so on. So this is a fruit of all that has been happening over the last few years. And don't forget that India, like the rest of the world, has had to face first of all the pandemic. I mean, in 2020, 2021, right up to 2022. Now in 2022, just as the whole world as well as India was reviving, you had the conflict in Ukraine, which has had ramifications for the entire world. I mean, the problems of disruptions in global supply chains, the problems in disruption of supply of commodities, whether it is food grains or whether it was precious metals, a whole range of products which are essential both for essential foods as well as for the manufacturing sector were held up. Despite that, what we might call external headwinds, the economy has been able to overcome this. And not to forget one major factor, the fact that oil prices shot up last year in March. After the Ukraine conflict, they went up to over $100 a barrel, $130 a barrel. And that was an area of concern for a country that imports over 85% of its requirements. Right. So despite that, the economy has been able to overcome these issues and now seems to be on the path to recovery. सुषमा जी, एक बार फिर से लौटते हैं जो S&P ने कहा है कि वर्ष 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बन सकते हैं, ऐसे यानी कह लें कि अंदाजे हैं वैश्विक रेटिंग एजेंसी के। यहाँ हम यह समझना चाहेंगे कि इस वर्ष के लिए जो अनुमान है 6.4% का, क्या हम इसको बीट करेंगे, इसको अचीव कर पाएंगे, और अगले वर्ष के लिए है कि हम 7 वर्ष यानी 2026 तक है कि 7% की दर हमारी हो जाएगी, और इस बूते जो लगातार एक विकास का सिलसिला शुरू होगा वह हमें तीसरी अर्थव्यवस्था बना देगा। क्या लग रहा आपको कि जो हमारे अभी पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, उन पर खरे उतरते हुए हम अचीव कर पाएंगे इसको? देखिए, अगर आप मेरे को पिछले हफ्ते ये पूछते तो मैं कहती हाँ, हम ये अचीव कर पाएंगे। 6.5% की जो दर है ये ग्रोथ की, हम अचीव कर पाते। लेकिन अब ये जो दूसरी तिमाही के जो डेटा आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उनसे दिखाई दे रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है
वो मतलब ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और तो इसका मतलब है कि मुझे लगता है कि 6.5 के बजाय शायद 7%, शायद 6.7% से 6.8% तक पहुंच जाए। तो ये बात नहीं है कि हम इसको अचीव कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इससे आगे बढ़ जाएंगे। और जो अभी खैर वो तो तिमाही हो गई है ये सितंबर तक, उसके बाद जो ये अक्टूबर नवंबर का जो डेटा, जो आंकड़े आ रहे हैं कंजम्पशन के, वो दिखाई दे रहे हैं कि और भी मतलब रिवाइवल और भी दिखाई दे रहा है। और कई इसके आंकड़े मैं आपको बाद में बता सकती हूँ। यहाँ पर श्रोताओं हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद हमारी चर्चा फिर से जारी रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back. We have with us Ms. Sushma Ramachandran. Sushma, we're talking about the second story which we carried was about India's services sector. It contributes a lot to India's GDP growth. What do you make of the story that we had with us? I mean, where do you see this going? Because there is something like it sees a one-year low of 56.9, and how do you analyze this story? Well, it is clear that there is a slowing down of the services sector. That also has been reflected in the second quarter data, because what were known as the contact intensive sectors, that is hotels, transport, trade, etc., that is growing only at the 8 in that quarter of 4.3%, much lower than all the other parameters that have been shown. However, we have to remember it continues to be a positive growth. So it's, even if it's 4.3, it's still a positive growth. Similarly, when you see the PMI data, it is positive, that is over the level of 50, which is 50 is the difference between contraction and expansion. So there remains an expansion in the services sector, but it has slowed down. Now, I think that this is, I would put this perhaps as a kind of a blip, because if manufacturing is picking up to this extent, then one would expect that the services sector would. I think what has actually happened is, but my assessment is that the services sector had picked up greatly last year. I mean, you saw the rapid pace of growth in services, and that was a kind of a reaction to all the constraints during the COVID period. So there was suddenly a rise in tourism, a rise in Revenge travel, tourism, revenge buying. tourism, and revenge buying. Whether even in financial services there was a growth. So this, I think, is perhaps a slowing down of that pace, but I don't think you're going to have at any stage any negative growth on this in this sector. यहाँ पर एक सवाल हम कृषि क्षेत्र पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। हम वहाँ पर जो नरमी देख रहे हैं, वहाँ जो विकास है उसमें थोड़ा सा पिछड़ता हुआ हम देख रहे हैं। क्या ये जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर है, या आंतरिक कारक है जिसकी वजह से यानी खेती के मोर्चे पर हम पिछड़ते दिखे हैं? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये क्लाइमेट चेंज का ही असर है। क्योंकि अगर आप देखें कि कई जगहों में ये फ्लड्स आ रही हैं, कई जगहों में खैर अभी तो साइक्लोन्स या वहाँ चेन्नई में आई हैं, लेकिन बहुत जगहों में जो आम तौर पे जो बारिश का प्रसार था, हाँ, मौसम होता था, वो कुछ अलग तरीके से मौसम की मतलब जो ट्रेंड्स हैं वो बदल गए हैं। तो उस वजह से जैसे प्याज और आलू के जो उनका उसके ऊपर असर पड़ा है। बीच में टमाटर के दाम भी बहुत बढ़ गए थे, क्योंकि टमाटर एकदम से इनफैक्ट उनका उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया था, उसके बाद बहुत कम हो गया। तो ये जो चीजें हैं जो अनएक्सपेक्टेड तरीके से क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये अब मेरे ख्याल में आगे वाले दिनों में शायद कृषि क्षेत्र में हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि आगे जो राय जो देते हैं किसानों को, वो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं शेयर बाजार की ओर। पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां लगातार
छठे कारोबारी सत्र में निवेशकों ने लिवाली की और प्रमुख सूचकांक आधी फीसदी से 1% के बीच बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 431 अंक बढ़कर 69,296 अंक पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 168 अंक बढ़कर 20,855 दर्ज हुआ। Benchmark indices ended higher for the sixth consecutive session today, with Nifty crossing 20,850. At close, the Sensex was up 431 points or 0.63% at 69,296, and Nifty was up 168 points or 0.81% at 20,855. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose by 0.14% and the small cap index added 0.12%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated while 10 companies declined. Power Grid jumped 4.4%, NTPC rose by 3.8%, and SBI added 2.3%. On the other hand, Hindustan Liver and HCL declined 1.4% each, and Bajaj fell 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors gained while 6 witnessed losses. Utilities sector jumped 6.5%, power sector gained 6%, and services sector rose by 3.9%. On the other side, realty sector declined 0.6%, IT sector lost 0.5%, and tech sector fell 0.4%. The overall market breadth was negative as shares of 1,731 companies appreciated while those of 2,031 declined. A total of 113 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 83 रुपए और 30 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 103.73 पर चल रहा था। Sushma, Sensex up 431 points at 69,296. It's time to rejoice. Is this a sign of hope and stability and of continuity, considering the state elections in the recent 4 states, and in fact 5, but 3 showing a sense of continuity of the same government, of the central government? Stock markets prefer the status quo, and they prefer stability, they prefer policy continuity. So the fact that the latest round of state assembly elections have brought back the present ruling party in 3 states out of 4, which implies, and of course it doesn't mean necessarily it will happen, but it does imply that when you look forward to the 2024 general elections, there is a very real possibility that the same party will come back to power. So this again implies policy continuity, stability, the same terms that you have been using. The stock markets prefer, and I think investors prefer, stability, and therefore they want the same kind of policies which are bringing India to bringing India to a growth rate of 7.6% in the second quarter. This is what investors are looking for. So the joy in the stock market obviously has erupted in terms of bringing the stock market the levels up so high. This is really clearly the factor. सुषमा जी, इसे हम यूफोरिया माने या ठोस कह लें कि हकीकत पर आधारित बाजार की तेजी माने, भारतीय बाजार की? देखिए, मार्केट जो है वो यूफोरिया पे बहुत चलता है। तो अभी स्टेट असेंबली के जो परिणाम आए हैं उनका जो असर है वो तो यूफोरिक तरीके से मार्केट ऊपर आई है। अगर इसके बाद कोई बुरी खबर आ जाए, मिसाल के तौर पे शायद कोई हमारा आंकड़ा जो है, मैं कोई नाम नहीं लेती हूँ, कोई भी आंकड़ा कोई अच्छा बुरा आ जाए, एकदम से मार्केट फिर नीचे चली जाएगी। तो लेकिन इस वक्त जो है वो यूफोरिया पे चल रही है, और पर इस वक्त और भी चीजें हैं
जिस वजह से मार्केट अभी ऊपर जा रही है। वो जैसे हमने जो आंकड़े किए थे वो सेकंड क्वार्टर की जो डेटा है, और इसके अलावा जीएसटी के डेटा हैं, मैं वही जीएसटी कलेक्शंस इतने ऊंचे जा रहे हैं, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, तो काफी इन्फ्लेशन, इनकम टैक्स ऑल्सो, हाँ, इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो 4.8 मेरे ख्याल आ गया है, 4.8% आ गया है। तो सारे जो आंकड़े आ रहे हैं वो पॉजिटिव हैं इस वक्त। तो एक तरफ यूफोरिया भी है और दूसरी तरफ जैसे आपने कहा ठोस वजह है कि जिस वजह से मार्केट ऊपर गई है। श्रोताओं, ठोस कारण भी बहुत साफ साफ दीवार पर लिखे दिख रहे हैं भारत की विकास गाथा के, और जो उत्साह है, उमंग है, वह भी बाजार में दिख रहा। यानी छलका हुआ जो मौसम दिख रहा शेयर बाजार का, उसके पीछे सारे फैक्टर मिले जुले हैं। यहां पर हम लेना चाहेंगे एक विराम, छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। मिलिए दान बहादुर जी से। अरे, अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग। सारे रिस्क समझे, पूरी रिसर्च की, एक्सपीरियंस है, थोड़ा थोड़ा, और लॉस होगा पूरा पूरा। ऑप्शंस में रिस्क ज्यादा होता है, समझ और क्षमता के हिसाब से लें। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। एक और अपने शेयर बाजार में हम लगातार लिवाली का सिलसिला देख रहे हैं। वहीं वैश्विक बाजारों में एशिया पर ध्यान दें तो वहां आज सभी प्रमुख बाजारों में बिकवाली दिखी। निवेशकों द्वारा की गई बिकवाली से दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.8% घाटे के साथ बंद हुआ। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 1.7% की गिरावट हुई। हांगकांग का हैंग सेंग 0.2% नीचे आ गया। जापान का निक्की 225 1.3% लुढ़क गया। उधर सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स में 1.9% की बड़ी गिरावट हमने देखी। यूरोपीय क्षेत्र की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली का सिलसिला दिख रहा था। अंतर्देशीय कारोबार में फ्रांस का कैक 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों 0.1% बढ़त के साथ चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 भी 0.6% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। When we compare, Sushma, the Asian markets vis-a-vis Indian markets, I mean, I know it's a comparison is odious, but still, we find Hong Kong's index declining and so on and so forth. But is it the fact, is the fact that in India now, it has a very peculiar market system. Now that, when we have Navratras, then the sales go up, and we have Shraddh, sales go down. Now the festivals are, it's the festival season. We're also going to have marriage season, robust. Correct. Is that also one of the reasons that there's going to be a huge buying and a lot of buying, selling activity taking place in the markets? Does that also affect the markets? It does, definitely. It affects the market. If but it could also affect the markets negatively if the expected demand in the festival season does not come about. Then the markets could get depressed also. That the sufficient trading has not taken place, sufficient consumption has not taken place. But that is not the case this time around. You are having very high sales of, for instance, fast-moving consumer goods. You're having high sales of automobiles. You are having high sales of all kinds of mobile phones. So all these factors are there, and therefore I think it looks as if this is also having an impact on the markets. In fact, Diwali and Dhanteras saw unprecedented sales, and especially of metals during Dhanteras, which was so that's a very despite the very high prices of gold and silver. Exactly. यहाँ पर सुषमा जी हम आपका ध्यान यानी एक बहुत अच्छा विषय अपने लालिमा जी ने उठा दिया कि जो त्योहारों के मौसम में जो एक बड़ा त्योहार भारत में उभरता हुआ दिख रहा है वह विवाह का त्योहार। यदि हम मान लें तो पूरा जो उसका यानी वेडिंग मार्केट है उसका ग्रोथ किस रूप में होता देख रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हम इस क्षेत्र में बड़ी कंपनियों को या कह लें कि कारोबार अभी भी बड़े स्तर पर हो रहा है कई क्षेत्रों में, उसमें क्या संभावना बनती नजर आ रही है? जिस रूप में नए स्टार्टअप हमारी कंपनियां उभर रही हैं, इस क्षेत्र को भी ऑर्गेनाइज होता हम देखेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ऑर्गेनाइज हो गया है और मेरे पास इस वक्त कोई डेटा नहीं है जो मैं आपके साथ
शेयर कर सकती हूँ, लेकिन डेटा अवेलेबल है इसके बारे में कि कितनी रेवेन्यू आ रही है, कितना खर्चा हो रहा है ये शादियों के ऊपर। अब एक तो है शादियों जो लोग अपने ही शहर में कर रहे हैं, दूसरा है डेस्टिनेशन वेडिंग्स। कुछ तो खैर हमारे देश के बाहर करते हैं, कुछ लोग देश के अंदर करते हैं, वो गोवा जाते हैं या राजस्थान जाते हैं। उन शादियों के ऊपर भी बहुत खर्चा होता है, और जैसे वो हवाई जहाज में जाते हैं उसका भी खर्चा होता है। तो अभी हाल ही में, अभी आज के पेपर में ये आया था कि जो हवाई जहाज को जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो प्री पैंडेमिक लेवल्स पे पहुंच गया है। तो ये जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये जो मैरिज की जो शादी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत बढ़ गई है, और इसमें ऑर्गेनाइज प्लेयर्स बहुत आ गए हैं, जो शादियों को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो शादियों को सप्लाई करते हैं, कई वेंडर्स बहुत आ गए हैं। If I may say in lighter vein, earlier we used to have Kumbh Melas and Char Dham Yatras to boost economy. Now we have destination wedding, and Prime Minister once very nicely said in Mann Ki Baat that we must have Indian destination, choose Indian destination to boost the Indian economy. Yes. Right. Moving on to the US markets now. US stocks ended lower on Monday, interrupting last week's rally as investors turned cautious ahead of employment data due this week that could alter expectations that the Federal Reserve will cut interest rates early next year. The Dow Jones Industrial Average fell 0.11%. The Nasdaq Composite Index lost 0.84%, and the S&P 500 down by 0.54%. A look at the oil now. Crude oil futures traded marginally higher on Tuesday morning as a private sector survey showed growth in China's service activities. In intraday trade, Brent crude was trading up at $78.41 per barrel, while US West Texas Intermediate crude was trading up at $73.39 per barrel when reports last came in. सुषमा जी, हम तेल की कीमतों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, और आने वाले दिनों में तेल का व्यवहार कैसा होता दिख रहा आपको, खासतौर से जो चीन से जो आंकड़े आ रहे हैं ताजे कि वहाँ सर्विसेज जो गतिविधियां हैं, यानी गतिविधियां हैं वो बढ़ती हुई दिख रही हैं, तो इसमें तेल के दाम कहाँ आगे बढ़ते दिख रहा है आपको? देखिए, तेल के दाम का जो मतलब प्रोजेक्शन है बहुत मुश्किल है। पहले तो हम कह सकते थे एक ज़माने में कि भाई सर्दियां आ रही हैं तो विंटर डिमांड, फ्यूल डिमांड जो मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है तो वो बढ़ जाता है और फिर दाम बढ़ जाते हैं, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो बहुत मुश्किल है। अभी देखिए 2 महीने पहले ओपेक प्लस ने अपने जो प्रोडक्शन है इसमें कटौती की थी 2.2 मिलियन बैरल्स। उस वक्त जो दाम थे एकदम से बढ़ गए थे, $90 तक आ गए थे। तो अब सडनली वो दाम $80 के नीचे आ गए। हालांकि हमारे देश के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब कटौती उन्होंने की उस वक्त, और उस वक्त ये भी अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे आप कह रहे हैं कि चीन में भी डिमांड बढ़ने वाला है, लेकिन उसके बाद ये दिखाई दिया कि यूरोप और यूएस में जो डिमांड है वो कम आ रही है और यूएस की प्रोडक्शन है बहुत बढ़ गई है, तो बहुत फर्क आ गया है। आइए अब चलें सराफा बाजार की ओर। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में समाचार तैयार की जाने तक सोना 271 रुपए बढ़त के साथ 62,640 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी 59 रुपए कमजोरी के साथ 76,100 रुपए प्रति किलो पर चल रही थी। वैश्विक बाजारों में सोना मजबूती के साथ $2,054 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रहा था। उधर चांदी भी थोड़ी सी मजबूत थी और $34.93 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी। बहुत संक्षिप्त में, एकदम संक्षिप्त में एक शब्द में यदि कहूं तो कि सोना चमक बिखेरता दिख रहा या नीचे आएगा? सोना अभी थोड़ी देर के लिए चमकेगा, फिर मेरे ख्याल नीचे आएगा। बस हाँ। यहीं पर श्रोताओं की ओर से सुषमा जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you. And now, before we close, as a reminder, the headlines: global rating agency S&P has said that India will be the world's third largest economy by 2030. Benchmark indices ended higher for the 6th consecutive session. Nifty crossed 20,850. Sensex closed at 69,296. And in intraday trade, Brent crude was trading at $78.41 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. Friends, this is myself, Lalema Aneja Dang, and my co-anchor Manoj Patak signing off. Namaskar. मिलिए एक और दान बहादुर से। इन्होंने गारंटीड रिटर्न्स के प्रॉमिस पर इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिट पक्का है, गाड़ी भी पक्की। मार्केट में रिस्क हमेशा होता है, कोई गारंटी कैसे देगा? आप छोड़ो ना। और आप हाथ धो लो,
पैसों से। गारंटीड रिटर्न्स धोखा है। स्टॉक मार्केट में लापरवाही न बरतें, दान बहादुर न बने। हाँ, अगर दान करना ही है तो अपनी सोच से करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट